Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing your social science का last revision session, that is for आज हम करने वाले हैं एक sample paper. So we have already done 2 to 3 sample papers before, so ये exam से एक most important sample paper कर लेंगे जिसमें सारे questions है as per your board exam. ठीक है, so let us start with sample paper discussion. Before that, make sure to like this video, share करो अपने friends के साथ जिनके board exams है, and also subscribe to channel right away. So let us start with the instructions. I will tell you first. ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, 3 hours का पेपर है, 80 marks का, ABCDE sections है. ठीक है, और F is also there. A में 1 mark का MCQs है, B में we have 2 marks, C में 3 marks, D में 5 marks. सेक्शन E में हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और सेक्शन F में हमारे पास मैप्स है. ठीक है, सो ये पूरा सैम्पल पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन ए 20 MCQs के साथ. सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट्स विद विच आर द फॉलोइंग आर परफेक्टली मैच्ड. ठीक है, हमको बताना है कौन सा मैच है. फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू कॉन्कर अमेरिका, इज इट ग्रीस? नो, ग्रीस और इटसेल्फ इन ओन प्रॉब्लम्स, तो ग्रीस तो नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट वन. Next is countries to the east of Mediterranean. Spain is not to the east of Mediterranean, like the Middle East countries. First Asian country to be industrialized is Japan. No, that okay, yes, Japan. Yes, we can say Japan. First Asian country, right? In Asia. Yeah. So answer will be only C. Okay, the one mistake here, this option is marked wrong. It is not only D, it is only C. Yes, so C is your right answer. Okay, C is the right answer. Now let's move to the next question. Next question says that in the above picture of Sorrien's utopian vision, the saints, angels, and Christ symbolize what? Those pictures which we discussed, right, about Sorrow, where he had the picture. All right. So what did it resemble? It resembled equality among people, fraternity, freedom of nation, or resentment against nation. So fraternity, that means brotherhood amongst the nations, was symbolized by Frederick Sorrow's painting. Okay, now this question, match the following we have to do. Now match the following. पहला देखो, ए हम इधर लिखेंगे साथ साथ में, ए बी सी एंड डी. सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स कौन करता है? आरबीआई करता है, फोर्थ वाला. नेक्स्ट, फर्स्ट एशियन कंट्री टू बी नेशनलाइज्ड, दैट वाज जापान. भी हमने पहले क्वेश्चन में किया. पायनियर ऑफ द सिस्टम ऑफ मास प्रोडक्शन, दैट वाज हेनरी फोर्ड. And no official religion concept does not give any special status, that is secularism. So 4 1 2 3 is option number B. 4 1 2 3. Okay, so that is your answer. Now next question देखो. Question says that in Britain, we have to write in ascending order. Okay, so Britain exporting iron and steel worth $77 million. Demand for iron and steel increased rapidly. Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton, and import of raw cotton was sold to 22 million pounds. देखो, पहले तो 2.5 million pounds वो लोग कॉटन का कर रहे थे फॉर द कॉटन इंडस्ट्री, करेक्ट. अब जो था वो 22 मिलियन पाउंड्स तक इंपोर्ट चला गया. जब इतना हो गया तब जाके आयरन एंड स्टील एक्सपैंड हुआ और उन्होंने एक्सपोर्ट किया था about 77. 3 4 2 1 is your right answer, option number B. Next question, which of the following is not a physical factor to determine the लैंड यूज को डिटरमाइन करने का, लैंड का जो यूज होता है? क्लाइमेट, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी और पॉपुलेशन डेंसिटी. सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज अबाउट योर ह्यूमन इंडेक्स एंड एवरीथिंग. यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स, जैसे टोपोग्राफी हो गया, सॉइल टाइप फिजिकल कैपिटल्स है. बट ह्यूमन फैक्टर्स जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सबसे कोई लैंड का यूज नहीं होता.
नेक्स्ट वन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको दिया गया आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, देन ओके द पिक्चर इज नॉट क्लियर, देन वी हैव द कर्नाटका, ओडिशा, महाराष्ट्र। अब क्या हमको बताना है स्टेट वाइज किसके बारे में बता रहे हैं, मैंगनीज, आयरन और स्टेनलेस स्टील या इलेक्ट्रिसिटी। सो ये ग्राफ डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में से है। ये आपको मैंगनीज प्रोडक्शन की डेटा देता है इन द ईयर 2016 टू 17, जिसमें भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा था। नाउ नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब देखो भाखड़ा नंगल डैम है ऑन द सतलज रिवर, पर भाखड़ा नंगल कौन से स्टेट में है, इट सतलज आ गया, सतलज किधर है, पंजाब में। सो फर्स्ट वन इज योर पंजाब। नाउ सेकंड वन, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम इज इन ओडिशा। ओडिशा में अब कौन सा रिवर आएगा, ओडिशा में भी ऑब्वियसली हैव आवर महानदी, करेक्ट, महानदी। सो आंसर विल बी बी, पंजाब एंड महानदी। Okay, next one. Identify the country. It is a small country in Europe. Okay, बहुत सारी countries होती है small, तो इससे हम identify नहीं कर सकते. Next one. Next test shares borders with France, Netherlands, Germany, and Luxembourg. Okay, government divided the powers equally between Dutch and French-speaking population. Dutch or French-speaking, so obviously answer will be your Belgium. श्रीलंका, इंडिया ये सब तो यूरोप में है भी नहीं, correct? So obviously Belgium is your direct answer. Now, next one. Question number 10 says, which of the following features are common to Indian and Belgium form of power sharing? Power sharing के basis पे कौन सा हमारे पास common चीजें हैं? First one, power is shared among governments at different, नहीं, that is federalism. No, first one is wrong. Next, power is shared among different organs of government. Yes, that is a correct statement. Then, power is shared among different social groups. Yes, that is also correct in Belgium and India. And power is shared among different parties that take place from. Yes. So the answer will be B, C, and D. All of them are correct statements. Next one, assertion reasoning. Assertion says that in the 15th religious farmer Martin Luther wrote 95 theses criticizing many of the practices ritual of the Roman Catholic Church. Reason था, this led to division of within the church and to the beginning of the Protestant Reformation. Correct, that's why उन्होंने criticism किया था. तो yes, both of them are correct और उसका exactly correct explanation भी है. Next one, question number 12. Federations that are found by holding together do not give equal power to its constituent units. Has a true statement है. Next one, some states are granted special powers. Yes, that's also true. Some states are granted special power. That's when federalism holding together doesn't works properly. So the answer will be both are true and it is the correct explanation as well. So now question number 13 says that which of the following is incorrect regarding the federal government. So we have to identify कि कौन सा statement federalism, federal government के लिए wrong है. So if you read the option, आपको डायरेक्ट लिख रहा है कि B गलत है. One level of government system नहीं होता है federalism. We like in India हमारा legislature होता है, we have executive, we have our जुडिशरी, सब में अलग अलग लेवल. वन लेवल सिस्टम का फेडरलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी कितनी कितनी जगहों पे है? सो दिस इज अ डेटा यू शुड नो दैट मोर देन 100 countries have adopted the democratic system of administration. Next question. Which of the following is not a developmental goal? Not a developmental goal for the landless rural laborers. जो landless है उनके लिए एक developmental goal क्या नहीं है? More days of work and better wages. हाँ, वो एक good एक developmental है. Local school is able to provide a quality education for their children. Yes, correct. There is no social discrimination. Wow, more good.
दे कैन नॉट बिकम लीडर इन द विलेज। ओके, सो ये हुआ एक गलत स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज अगर वो लैंडलेस है, अभी वो मतलब उनकी कम्युनिटी की प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं कि आप लैंडलेस ऑफ लीडर्स नहीं बन सकते, बट एज पर लॉ, एज पर पॉलिटिक्स, यस, लैंडलेस जो लेबरर्स है वो भी लीडर बन सकते हैं इन द पंचायत एंड एवरीथिंग। अब देखो नेक्स्ट वन, अगेन कुछ हमको डेटा टेबल दिया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कितने अनऑर्गेनाइज्ड है, कितने ऑर्गेनाइज्ड है, टोटल कितने विद परसेंटेज। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? हमको ऑर्गेनाइज सेक्टर का ढूंढना है, ऑर्गेनाइज किधर है, यहाँ। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर का करने के लिए हमको पहले इसके वैल्यूज इनटू टोटल करना है। सो वी विल राइट टू, टू प्लस 2 + 5 + 20, करेक्ट, +20 + 27 करेंगे तो हमको मिलेगा 54, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी वैल्यूज दी गई है, ऑर्गेनाइज और अनगा दोनों का मिला के टोटल कितनी दी गई है हमको, दैट इज 202 +55 +100 +357। ठीक है, कितना होता है 714। ठीक है, इनटू करेंगे हम 100 से। ठीक है, फॉर परसेंटेज। अब यू कैन सिंप्लीफाई बाय टू स्टेबल, उन सबके साथ 2 और 3 के टेबल से करोगे, यू विल गेट अराउंड 9/119 इंटू 100, दैट गिव्स यू 900 डिवाइडेड बाय 119, करेक्ट। 900 divided by 119 will give you approximately 7.56%. That means 7.6% is your answer. ठीक है, 7.6% becomes your answer over here. All right, 7.6 is the answer. अब देखो, read the information given below and select the correct option. A study in Ahmedabad found out that 15 lakhs, yeah, 15 lakh workers in the city, 11 lakh worked in the unorganized sector. ठीक है, 11 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। द टोटल इनकम ऑफ द सिटी इन दिस एरिया इन दिस ईयर वॉज रुपीज है, ठीक है, रुपीज 60,000 million. Out of this 32,000 million was generated in organized section। ठीक है, सो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे, ठीक है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ऑल राइट, सो अभी हम क्या करेंगे, वी हैव गिवन दैट 15 lakhs जो वर्कर्स है उसमें से 11,000 अनऑर्गेनाइज्ड है, करेक्ट, 11,000 अनऑर्गेनाइज्ड है। सो रिमेनिंग कितने हुए, 15 लाख में से 11 लाख तो अनऑर्गेनाइज, तो बचे कितने, 4 लाख वर्कर्स आर ऑर्गेनाइज्ड। सो ए इज योर आंसर। Next question. Consider the following statement regarding the use of money and identify the incorrect statement. हमको find out करना है कि इसमें से money के बारे में incorrect statement क्या है। The use of money spans a very large part. Yes, that's a true statement. Then, when the two parts when the two parties have to agree to sell and buy each other's commodities is called double coincidence. Yes, that is also right. Modern forms of money include currency, paper notes, coins, etc., checks. Yes. Other form in which people hold money is as promissory note with the banks. No, that is not the answer. So that will be our answer. ठीक है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है कि जो बैंक के में promissory notes जो banks hold नहीं करते. Okay, so that is the incorrect one. Now, which of the following statement is correct with regards to India? A tertiary sector contribute to maximum GDP? हाँ, वो करेक्ट है। टर्शरी में आपके सारे सर्विसेज आते हैं, राइट, ऑल द सर्विसेज व्हेन आई टॉक अबाउट कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। सो सेक्टर जिसमें ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज टर्शरी सेक्टर, एंड दैट इज अ सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एंड ऑल द GDP is contributed by tertiary itself. Last question. Which of the following is not applicable for a worker who works in the organized sector? जो organized में काम करे उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, that we have to find. Not applicable. Okay.
सो पहला स्टेटमेंट कहता है शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, ऑर्गेनाइजर्स हाँ जरूर मिलेगी. शी इज नॉट पेड फॉर द लीव. Yes, that is not applicable because even who work in organized sector also they get paid for the leave if it's genuine. Okay, so that is a नॉट एप्लीकेबल स्टेटमेंट. इस तरीके से हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है. नाउ वी मूविंग टू सेक्शन बी, आर 2 मार्कर क्वेश्चंस. ओके, 2 मार्कर्स की तरफ बढ़ते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन says that state the basic and main objectives of the new economic policy. जो न्यू economic policy थी in 1991, what were the ऑब्जेक्टिव. सो 2 मार्क्स से 2 पॉइंट लिखेंगे. इट रेफर्स टू द ऑनगोइंग लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन 1991 ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज. इकोनॉमिकली लिबरलिज्म, फ्रीडम है ना, ग्लोबलाइजेशन दूसरी कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन करना, प्राइवेटाइजेशन स्टार्टेड इन 1991 विद एनईपी. It was introduced with the goal of making the economy more market oriented and expanding the role of private and forest investments. जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, द प्राइवेट एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स को बढ़ाने के लिए, करेक्ट, टू अट्रैक्ट देम, क्या हुआ, वी वर स्टार्टेड विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ताकि बाहर के भी लोग और हमारे कंट्री के भी लोग आके हमारे बिजनेसेस में इन पे करें. करेक्ट. Now, efficient means of transport are prerequisites for the fast development of a country. Support the statement with example. अब देखो, means of transport जो होता है definitely they are needed, like they are prerequisites for the fast development of the country. Why? For carrying passages and things from one place to another हमको transportation चाहिए. Raw materials can reach faster, reach factories or like in your trucks and everything. करें वो fast पहुंच जाएंगे. Movement of finished goods from their supply location to demand location necessitates the need of transport. जहाँ पे उनका finished good बन, like in the factories, to जहाँ पे वो चाहिए हमको. Correct. To there, mobility of labor force also increases. Labors की भी मतलब transportation हो पाता है. And some people are engaged in facilitating the movements are known as the traders, who make products come to the consumers by the method of ट्रांसपोर्टेशन. सो अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो डेवलपमेंट फास्ट होगी कंट्री की. नेक्स्ट वन, the assertion of social diversities in a democratic country is a very normal and can be healthy. Justify the statement. अब देखो, when I talk about assertion of social diversities in democratic country, it is normal and healthy, and the following arguments given in the favor. In a democratic country, every person and community has the right to state their views and opinions. We can also say that as right to speech, correct, right of expression, so we can express our views, and this is normal and healthy. इससे क्या होता है, दिस अलाउज द लेस प्रिविलेज्ड एंड मार्जिनल ग्रुप्स ऑल्सो टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स एंड ग्रीवेंसेस एंड कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू अटेंड दिस. जो ओबीसीज है, करेक्ट, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब भी अपने व्यूज को कर सकते हैं. जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे कैन एक्सप्रेस द व्यूज बाय दिस राइट ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल. All this leads to the strengthening of the democracy. Now, why do banks and cooperative society need to lend more? उनको और पैसे क्यों देने चाहिए to the borrowers? Explain. Banks and cooperatives need to lend more to borrowers because informal sources की वजह से, क्योंकि informal sources exist करते हैं. और क्यों करते हैं? Because of the credit lenders, they charge high interest rates and also change term and conditions. ठीक है, such kind of credit can be exploitative मतलब जिनको कितना कुछ आइडिया नहीं है वो लोग इनके मतलब इन द प्लान्स वो लोग फंस सकते हैं. एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स जैसे रिलेटिव, फ्रेंड्स, मनी लेंडर्स, ये एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, एंड दे कैन इवन समटाइम्स चीट, है ना, समटाइम चीटिंग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, अच्छा सेक्शन बी हो गया. अब चलते हैं हम हमारे सेक्शन सी पर, हमारे 3 मार्कर क्वेश्चंस पे. 3 मार्कर पहले स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्ट्री से. हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड टाउन? सिटीज और टाउन में कैसे स्प्रेड हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सो द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी. मिडिल क्लास ने स्टार्ट किया था पार्टिसिपेट करना आफ्टर महात्मा गांधी इंस्ट्रक्शंस.
स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ दिए थे, हेडमास्टर्स टीचर्स ने अपनी जॉब्स रिजाइन कर ली थी, लॉयर्स ने अपने लीगल प्रैक्टिसेस लॉयर हियरिंग्स करना वो सब छोड़ दिया था। काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस, ठीक है, एक्सेप्ट मद्रास वेयर जस्टिस पार्टी टुक पार्ट इन इलेक्शंस। जैसे इन द कंट्री हमारे पास प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थे। सो जो प्रोविंसेस में इलेक्शंस चल रहे थे वो सबको बॉयकॉट रहे थे, बट मद्रास में जस्टिस पार्टी ने इलेक्शंस लड़े। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स दे रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स जो बाहर के थे और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स, एंड द पीपल बिगन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेंट गुड्स, दे बॉयकॉटेड, करेक्ट, दे बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, ठीक है, एंड वोर ओनली इंडियंस लाइक खादी। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट ट्रिमेंडसली, बिकॉज अब सब इंडिया का यूज कर रहे थे, इंडिया का यूज करेंगे तो इंडिया की भी तो टेक्सटाइल का फायदा होगा। नाउ next question is, how had the printing press created a new culture of reading in Europe? Explain the example. 3 points है, पहला वाला है increase in literacy rate. By the end of the 18th century, in some parts of Europe, literacy rate was high as 60 to 80%. 60 to 80% तक literacy rate बढ़ गई थी because लोग अभी books पढ़ना चालू कर दिए. As literacy in schools spread in European countries, there was a virtual reading mania. So एक मतलब सारे पढ़ने लगे, अरे वाह बुक्स है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब पढ़ने लगे, उसमें तो लिटरेसी हाई हो गई। नेक्स्ट, new forms of literature. In England, penny chapbooks, as I said, जो पुअर पीपल के लिए होती थी chapbooks, वो सोल्ड कर देते थे, बेचते थे वो लोग, एकदम सस्ती आती थी, एंड द सो इट वाज सोल्ड बाय पेटी पैडलर्स नोन एज चैपमैन फॉर अ पेनी। एक पेनी के लिए वो लोग ये चैपबुक्स बेचते थे, जो बेचते थे उनको बोलते थे चैपमैन, और जो पुअर पीपल थे वो लोग भी बुक्स खरीद सकते थे और उनसे पढ़ सकते थे। इन फ्रांस, bibliotheques were printed which were low price small books printed on poor quality paper and bound in cheap blue colors. ब्लू कलर्स में वो होता था प्रिंटेड, सॉरी कवर होते थे, और क्वालिटी भी कम होती थी। एक पेनी के बुक के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ी ना इतना अच्छा फैशनेबल अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट पॉइंट इज द पीरियोडिकल्स। अब पीरियोडिकल्स का क्या था? द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th century से बन गए थे वो, कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स विद एंटरटेनमेंट अबाउट वॉर्स, ट्रेड एक्सेट्रा डेवलपमेंट। साइंटिस्ट ने भी अपने व्यूज दिए, फिलोसोफर्स ने भी अपने व्यूज दिए, आइजैक न्यूटन बड़े फेमस पर्सन, देन थॉमस पेन, वॉल्टेयर, जीन जेकस रोसो एक्सेट्रा, इन सब ने अपने व्यूज एक्सप्लेन किए, एंड नाउ बिकेम मोर एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। कॉमन पीपल जो थे उनको भी ज़्यादा आइडिया मिल सका, वो भी थोड़े एजुकेट हो सके। Ancient and medieval scientific texts were compiled and published. Maps and scientific diagrams were printed. So all these things में क्या हुआ, यूरोप में रीडिंग का एक नया कल्चर आ गया। Next, explain with examples how do industries give boost to the agriculture. Industry और agriculture में कुछ है? Yes, they actually work hand in hand. ठीक है, when I talk about industries and agriculture, दोनों hand in hand काम करते हैं। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, दे एनहांस एग्रीकल्चर बाय रेजिंग द प्रोडक्टिविटी. They depend on the latter for raw materials and products like irrigation pumps, fertilizers, pesticides, plastic, PVC pipes, then agriculture machineries and tools. Mostly ये सब आने लगा था after your green revolution. So green revolution के बाद ही these things were introduced, HYV seeds and everything. Development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists but also made the production process, the competition होने लगा। So लोगों ने इंडस्ट्रीज और अच्छी बनेगी, क्वालिटी और अच्छी हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो हमारा ज़्यादा नाम हो। Next, state any three important features of federalism. Federalism, as you know, different kind of tiers. It's not always three. हमेशा different types of tiers होते हैं government के, और हर tier एक specific function करता है. Each tier has its own jurisdiction and specific matter of legislation, taxation, administration. ठीक है? Jurisdiction of respective levels or tiers of government are specified in the constitution. Like we have our legislature, correct, we have legislature,
देन हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव, करेक्ट. वी हैव आवर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एंड वी आल्सो हैव आवर जुडिशरी, करेक्ट. सो ये इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ऑल ऑफ दोस फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, किधर कितना काम कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. Fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed, but by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ये तो बस लेजिस्लेचर या बस एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता, सारों को मिलके all of these have to come together and they can make a decision. Next, next question is tertiary activities help in the development of primary and secondary sectors. टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी सब आपस में कैसे मिले हुए हैं. टर्शरी सेक्टर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है. दीज एक्टिविटीज आर एन एड और यू कैन से सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड. दीज आर योर टर्शरी थिंग्स. अभी देखो, प्राइमरी से आपने कॉटन लिया, ठीक है, कॉटन से बनाया आपने क्लॉथ, अब क्लॉथ भेज दिया आपने शॉप में, अब शॉप से आपको मिलना है तो क्या होगा, ये हो गया आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी. अब टर्शरी देखो, अगर शॉप में हम मार्केटिंग ही नहीं करेंगे बेचने का, सो हाउ दिस टू विल नॉट सर्वाइव, है ना. सो दैट्स व्हाई दे ऑल आर इंटररिलेटेड बाय एक्सपर्टीज, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन. अब चलते हैं हमारे 5 मार्कर क्वेश्चंस की और देन विल डू केस स्टडी. सो 5 मार्कर क्वेश्चंस देखते हैं अब. 5 मार्कर क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज. इंडिया की इंडस्ट्रीज में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था. British mills were busy with war production to meet needs of army, so Manchester imports into India declined. Indian mills के पास vast home market to supply था, इंडिया भी थोड़ी सप्लाई करने लग गई. एज द वॉर प्रोलॉन्ग, इंडियन इंडस्ट्रीज कॉल्ड अपॉन वॉर नीड्स लाइक जूट बैग्स, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म एक्सेट्रा. जब वॉर बढ़ गया, ब्रिटिश अब प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो उन्होंने बोला कि अभी हमको इंडिया से सामान चाहिए. न्यू फैक्ट्रीज वर सेट अप एंड ओल्ड वंस रन इन मल्टीपल shifts. Many new workers were employed and everyone worked for longer hours. Okay, next one. Give reasons for increasing use of fertilizers in farming. Farming में हमको fertilizers क्यों चाहिए? This is more of a biological question also. क्यों चाहिए हमको? To boost nutrients in the ground, increase fertility of harvesting, kill weeds and pests that harm the crop, and reduce the quality of the crop. अच्छा सॉरी, टू डिस्ट्रॉय द वीड्स एंड पेस्ट जो क्वालिटी को कम करते हैं. सो फर्टिलाइजर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर टू ऑल्टर हैबिटाइट आर्टिफिशियली. ठीक है, जब हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वी आर क्रॉप गेट्स मोर बेटर. Suggest any 5 ways to reform political parties in India. First one, a law should be made to regulate the internal affairs of the political party. Point number 2, it should be made compulsory for political parties to maintain a register of the member. कितने members है, you should make a register. Third point, it should be made mandatory for political party to give a minimum number of tickets, like 1/3 to women candidates जाएगा, then दो कितने SC ST को जाएगा. That political party should make a list. There should be a quota for women in the decision making also. Women's को भी part लेना चाहिए in these political parties, उनको भी include करना चाहिए. And there should be state funding of the elections. ठीक है, so this is all your 5 ways to reform political parties. Next, impact of globalization has not been uniform. Explain with examples. अब देखो, जब हम globalization की बात करते हैं, consumers को बहुत फायदा होता है, correct? But there are some well-off sections in urban areas also. There's greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower price products. अभी उनके पास globalization का quality improve होती है और कम price में. So as a result, these people enjoy higher standards of living. ठीक है, and several of the top Indian companies have been able to benefit, like Amul we have, then Tisco in the history, not now like that. Now have been able to benefit from increased अभी competition इतना आ गया है, सबको होना है कि अगर A और B दोनों कंपनीज है,
अगर सिर्फ ये होता था, अगर उसकी क्वालिटी भी कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पता है कि सब मेरे से खरीदना पड़ेगा। बी है, सी है, इतनी सारी कंपनीज है। सो क्या होता है कि उनको सबको होता है कि नहीं, हम सब कंपटीशन में, जिसका अच्छा हो उसका सब खरीदेंगे। सो दे इम्प्रूव their क्वालिटी, they have invested in newer technology and production methods and raised their production standards. So rising inequality coupled with unequal benefits also, due to impact of globalization being different to different segments, it is said that it is not uniform. हर जगह अलग अलग, गाँव में, रूरल एरियाज में इतना नहीं फोकस दिया जाता, राइट। अब चलते हैं सेक्शन ई पे, केस स्टडी बेस्ड। एज ए से यू गाइस ऑलवेज, आप केस स्टडी पढ़ लो, बिकॉज इफ यू स्टार्ट रीडिंग केस स्टडीज में टाइम वेस्ट होगा एंड डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम वन डे बिफोर एग्जाम। सो ये पूरा पढ़ लो आप, यू कैन पॉज द वीडियो, रीड इट एंड विल डू द क्वेश्चन। वंस यू आर रेडी देन resume the video, then we'll read it. Okay, so let us start with the questions. Question says that, first one, what will generate by the oceanic tides? If आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। हमको इसमें बताना है कि जो ओशनिक टाइड्स है, ठीक है, जो ओशनिक टाइड्स होती है उसमें से व्हाट इज द मेन थिंग, मतलब कि क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है, व्हाट ऑल थिंग्स आर जनरेटेड बाय इट। सो ओशनिक टाइड से हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रल पावर एज यू नो, ठीक है। नाउ what do गोबर गैस प्लांट्स ऑपरेटेड, what do गोबर गैस प्लांट्स ऑपरेट, वो क्या ऑपरेट करते थे, दे यूज टू गोबर, दैट इज नथिंग बट योर कैटल डंग, ठीक है, कैटल डंग से वो बायोगैस प्रोडक्शन करते थे। हाउ एटॉमिक एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, एटॉमिक एनर्जी कैसे मिलती है, इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। न्यूक्लियर पावर या एटॉमिक पावर, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बिगाड़ देते हो, उसको हिला देते हो और वो एटॉमिक एनर्जी में बदल जाता है। दिस इज योर नेक्स्ट पैराग्राफ। कुछ सोर्सेस दिए गए, सोर्स ए, सोर्स बी और सोर्स सी। ये पहला सोर्स ए और बी है, ठीक है, कैन पॉज एंड रीड इट। दिस इज योर सोर्स सी, ठीक है, ये सी सोर्स है। ये तीनों में से आपको तीनों पढ़ने, देन वी हैव 3 क्वेश्चन फ्रॉम दैट, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस कम हियर, व्हाट आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, हमको बताना है कि डेमोक्रेसी के बेसिस क्या है। द मेन बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी आर नथिंग बट रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, करेक्ट, रिस्पेक्ट करना एंड freedom for the country, that is the main base of democracy. Why is democracy considered superior form of government? Why? Because ये लोगों की dignity को high chances देता है, we get to choose, हम अपनी voice raise कर सकते हैं, right, and we can express our views. Next one, how does the Indian democracy strengthen the claims of disadvantaged and discriminated caste? करेक्ट, हम उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, हम उनके लिए रिजर्वेशंस बनाते हैं, करेक्ट, रिजर्वेशंस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल opportunities are provided for the weakened sections of the society as well. Okay, नेक्स्ट देखो, अभी एक और लास्ट सोर्स है, आई गेस ये, ठीक है, लास्ट केस स्टडी आपकी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, या लास्ट ही होगा शायद। सो दिस इज योर केस स्टडी, ठीक है, पॉज इट, रीड इट, विल गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन. So question says that, what are the things other than income which people seek for living, एक living के लिए apart from income, पैसों के अलावा what else they want, we they should be they should have dignity, मेजरली डिग्निटी चाहिए रहती है, राइट, एंगेजमेंट इन पेड वर्क एंड द डिग्निटी इन द हाउस होल्ड सोसाइटी, ठीक है, इसमें मेन चीजें ढूंढते हैं लोग, राइट। एनी टू डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ मिडिल क्लास विमेन, इनकम, ठीक है, पहला तो इनकम हो गया, इनकम एज मेंस को मिलती है, करेक्ट, एंड इवन क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट इज नॉट दैट उनको बस बच्चे संभालने हैं, बस घर का काम करना है, दे शुड बी एबल टू गो आउट एंड डू थिंग्स एज वेल। व्हाट इज द रोल ऑफ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स देन इनकम इन लाइफ, क्या होता है, इक्वालिटी, करेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना सबको, इक्वालिटी, देन सिक्योरिटी, करेक्ट, सिक्योरिटी मिलना लोगों को, एंड इवन रिस्पेक्ट, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद द इनकम यू अर्न, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन एफ पे, हमारा सेक्शन एफ कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट योर
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। केस स्टडी है ये, नॉट, सॉरी सॉरी, मैप वर्क है ये, ठीक है। चलो मैप्स करते हैं। पहला दिया गया है, ऑन टू प्लेसेस ए और बी मार्क्ड है, आई डोंट नो द इमेज वाज ब्लर, ए और बी मार्क्ड है। अब देखो, द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920, ए वो जगह, सो कहाँ पे हुआ था 1920 में नेशनल असेंबली का? इट वाज इन नागपुर, नेशनल असेंबली नहीं, सॉरी, कांग्रेस का, सो नागपुर। नेक्स्ट वन, प्लेस वेयर सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन, सॉल्ट लॉ कहाँ पे ब्रेक किया था? इन अहमदाबाद, देन डांडी, ठीक है। ये आपके 2 मार्क्स मिल गए। अब नेक्स्ट है आपका, सेम मैप पे आपको लोकेट करना है, लेबल एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल सिंबल्स, ठीक है। कोई भी थ्री करने, हम सारे करने। फर्स्ट वन, पारादीप मेजर सी पोर्ट है वो, ठीक है। पारादीप मेजर सी पोर्ट है। इफ यू हैव वॉच्ड माय दिस थिंग, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसपे सारे हमने मैप वर्क्स किए थे, सो इफ यू डू इट यू शुड रिमेंबर। पारादीप आपका होता है समवेयर ओवर हियर, करेक्ट, नियर ओडिशा छत्तीसगढ़ के एरिया में, सो दिस इज योर Paradweep. Okay. Next, Noida. Noida comes in your Uttar Pradesh, Delhi का area. This is your Noida. Software park है. Then Salem, iron and steel industry Salem में, correct. That comes down. You have to go down in south. ठीक है. यहाँ पे आता है आपका Salem. And next one is your Kallapakam nuclear power plant. Kallapakam nuclear plant is near to Salem over here. So this is your Kallapakam न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। सो ये हो गए आपके सारे मैप्स डन। एंड विद दिस हमने कर लिया है आज का सेशन पूरा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग टुडे सेशन। हमने पूरा का पूरा सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया, हमने हिस्ट्री का सेशन किया है, देन वी हैव डन ज्योग्राफी का। ऑल ऑफ दिस सेशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। Make sure to like this video, share with your friends, subscribe to our channel ko, and very very all the best for your exams tomorrow. I'll be seeing you in the next video, so then take care and goodbye.